Hi, boys and girls. We have been discussing the chapter tissue, and we have discussed in this chapter till meristematic tissue. Again, I'll start with the topic in a nutshell. We'll try to recap what is there about meristematic tissue, like the nature of the tissue. So, if we go back to this particular slide, then it is like nature. It's like small, round and undifferentiated. Nucleus, it has a very large and a prominent nucleus, a big nucleus. Intercellular space, they are absent. Cell wall, it's a very thin cell wall. Function, it is involved in growth. Division, undergoes regular division. Differentiation उसका होता रहता है. It's a living tissue. Type of a tissue, it is a simple, and living or dead, so it is a living. As it is living, it is undergoing the regular division. So this was the topic in the nutshell that what we have seen in a previous lecture. Continuing from here, what we are going to start today is permanent tissue. कहाँ से आता है permanent tissue? Permanent tissue जो है वो आता है meristematic tissue से. जो meristematic tissue है, that is the meaning of meristematic का मतलब होता है division and redivision, that is regeneration. Permanent के अंदर वो सारे cells जो एक बार मान लो बन गए टिश्यू में और उसके बाद उनका डिवीजन बंद हो जाता है, उनका ग्रोथ बंद हो जाता है, they become dead, then they are known as permanent tissues. So, a group of cells in which the growth has either stopped completely or for the time being forms a permanent tissue. Some cells derived from the meristematic tissue lose the ability to divide and take up the specific role. This cell forms permanent tissue. The developmental process by which the cells derived from the meristematic tissue transforms into the permanent tissue is called differentiation. So the process of converting from simple meristematic tissue to the permanent tissue is called differentiation. Now, types of permanent tissue. Permanent tissues are classified broadly into two. One is like simple permanent tissue and a complex permanent tissue. एक टाइप के सेल्स होते हैं इसलिए सिंपल, अनेक टाइप के सेल्स होते हैं इसलिए called complex. Simple के अंदर look at a pronunciation. Simple permanent tissue is classified into three types. One, parenchyma. It's pronounced as parenchyma. Second is collenchyma. Collenchyma. Third is sclerenchyma. Sclerenchyma. These are the three types of simple permanent tissue. Under parenchyma, there are three more divisions, and they are from parenchyma. There are three, 1, 2, and 3. This is chlorenchyma. Chlorophyll वर्ड आपको पता होगा, प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, उस पर से वर्ड है chlorenchyma. Arenchyma and storage parenchyma. These are the three types of parenchyma. Pronunciation chlorine, colon. Chlorenchyma किसका है? Parenchyma का एक पार्ट है. Collenchyma क्या है? This is one of the type of the simple permanent tissue. Complex permanent tissue में दो है, xylem and phloem. So we are going to this simple permanent tissue. ये उसका flowchart है. We are going to look at each type of tissue and the sub tissue in it in detail now. There are the different types of permanent tissue formed due to the differences in their specialization, that is simple or complex. The permanent tissue consists of the two types of the tissue, simple permanent and complex permanent. The permanent tissue in which the cells are similar in structure, origin and function are called simple permanent tissue. They are in structuring, in function, in origin एक ही टाइप के सेल होते हैं, they are called simple permanent tissue. There are three types of simple permanent tissues: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay, parenchyma का ये डायग्राम है, देख रहे हो यहाँ पर ये लाइक, ओके, उनके जो शेप है,
स्क्लेरेंकाइमा का जो शेप है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रोमिनेंटली क्लियर न्यूक्लियस, तो स्पेस काफी ज्यादा दिखती है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्पेस कम होती है. दिस इज व्हाट द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू लुक्स लाइक. ओके, सो दिस इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, लाइक आप नोटबुक में लिखोगे लाइक व्हाट इज परमानेंट टिश्यू. डेफिनेशन: differentiate between permanent and meristematic tissue based on the function, cell wall, intercellular space. अगर ये अभी नहीं आता है तो जब मैं फिनिश करूंगा तब इसको पूरे टॉपिक को एक बार देख लेंगे. डिफरेंस बिटवीन permanent tissue and meristematic tissue. Now coming to parenchyma. Parenchyma, उसका नेचर क्या होता है? तो parenchyma is derived from the Greek word para means side and enchyma means infilling. उसके अंदर क्या होता है? Parenchyma is a precursor that is comes before any other tissue. सबसे पहले आता है parenchyma. It's a precursor tissue. Characteristics: parenchyma is unspecialized cells with thin cell wall. उसकी cell wall बहुत ही पतली होती है, thin होती है. Unspecialized, इसका कोई बहुत basic specialization, उसका कोई काम का function का नहीं होता है. Cells are living and usually they are isodiametric. Isodiametric का मतलब होता है having same diameter. Cells are usually loosely packed. Loosely packed मतलब एकदम compact नहीं होते, पास नहीं होते, space होती है अंदर. Intercellular space are found in this tissue that helps to store food and water. So there is a lot of intercellular space. Types of parenchyma tissue, that is chlorenchyma. When the parenchyma cells are exposed to the light, they develop the chloroplast in them. And such a tissue is known as chlorenchyma. तो जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है उसको बोला जाता है chlorenchyma. अंदर parenchyma, the first one is chlorenchyma. It contains chloroform, that is from जिसमें से chloroplast बनाता है, sorry chlorophyll बनाता है. chlorophyll जो होता है that is called chlorenchyma. It helps in the maximum photosynthesis. So जो chlorophyll है उससे प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसलिए इस टिश्यू का नाम भी दिया जाता है क्लोरेंकाइमा. जो क्लोरोफिल है दैट इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू. एरेंकाइमा, आपने देखा होगा लोटस का लीफ फ्लोट होता है. कुछ एक्वेटिक वीड्स जो फ्लोट होते हैं, फ्लोट होने के लिए उनके सेल्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है व्हिच इज फुल ऑफ एयर स्पेस, जिसकी वजह से जो लीफ होता है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकता है. वो जो स्पेसिफिक सेल्स है दे आर बेसिकली कंटेनिंग एरेंकाइमा. एयर भरता है अंदर, एयर के से वर्ड आया, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नेम्ड एज एरेंकाइमा. सो इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन parenchyma to give the buoyancy. buoyancy का मतलब floating capacity to the plants and to help them float. Such parenchyma types is called erenchyma. Storage parenchyma. In storage tissues, the parenchyma modifies to store nutrients and water. तो उसका जो मेन काम है वो स्टोरेज का ही है. नेम इटसेल्फ सजेस्ट what is that function. The cells of the parenchyma are involved in various physiological activities like photosynthesis, assimilation, storage, secretion, excretion, etc. So these are the various functions of parenchyma. So physiological activities like photosynthesis, assimilation mix करने के लिए, storage, secretion and excretion. Go through this. Okay, fine. Now come to next, it's parenchyma. Parenchyma is a simple tissue composed of more or less elongated cells with characteristically uneven thickening of cell wall. साइड की तरफ वो ज्यादा थिक होते हैं, उनके सेल वॉल पे एक मटेरियल होता है, लिग्निन बोला जाता है, एंड पेक्टिन का डिपोजिशन होता है टुवर्ड द सर्कुलर एजेस. ओके, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट. प्लांट को हम खींचते हैं, बैंड हो जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस parenchyma. It allows easy bending in various parts of the plant like stem, leaves, etc. without breaking. They are living and effective mechanical tissue. They are the living tissue and basically वो movement में काम आते हैं, इसलिए it's called mechanical tissue. You can note down those 2 points in your notebook. याद रखना है कि आपको
ये सारे जो पॉइंट्स है वो नोट रूप रेगुलरली लिखते जाना है, पॉज कर करके। सिर्फ ये सुनना नहीं है। वीडियो इज नॉट फॉर लिसनिंग, इट इज फॉर नोटिंग डाउन टू। You can note down. Okay. Colon. It provides elasticity and support to growing organ. Cells of the colon are large with very little intercellular space. The cells of this tissue are elongated and irregular, thickened at the corner. Corner के ऊपर वो ज़्यादा मोटे होते हैं. The cell wall is made up of cellulose. उसका जो cell wall है, it is made up of cellulose. Shape याद रखना, it's elongated and irregular, and it is irregularly thickened at the corner. Next, it's sclerenchyma. Sclerenchyma. Okay. नारियल की छाल थिक वाला सेल होता है. नारियल का जो आउटर लेयर होता है वो थिक होता है. उसके अंदर जो सेल होते हैं, दे आर बेसिकली sclerenchyma. Okay, sclerenchyma is a third simple but dead and mechanical tissue characterized by absence of living protoplast. It is a tissue which makes the plant hard and stiff. जो मैंने बोला कि नारियल की छाल के अंदर sclerenchyma होता है. Now you can correlate that part. Cells of the sclerenchyma are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. Lignin नाम का एक केमिकल है, वो प्रेजेंट होने की वजह से उसकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो एकदम थिक हो जाती है, लंबी हो जाती है, नैरो हो जाती है. Lignin is a chemical substance which acts as a cement and hardens them. Lignin is impermeable to water. पानी से कोई असर नहीं होता है. Sclerenchyma is seen in the husk of a coconut. So these are the few characteristics of sclerenchyma. You can note it down. Sclerenchyma is a dead mechanical tissue. It provides strength to the plant parts. It makes the plant hard and stiff. It is a dead cells. The tissue is present in stems, around the vesicular bundle, in the veins of the leaves, and in the hard covering of the seeds and nuts. इस अलग-अलग जगह पर होता है. कई बार जैसे चीकू के अंदर, चीकू को हम टच करते हैं काट के, तो एक अजीब सा करकरापन उसमें, गुआवा में, जामफल में ऐसा उसको कट करके उंगली घुमाओगे तो स्मूथ नहीं होता है, एक दाने दाने दिखेंगे, थोड़े लगते हैं, वो फील होते हैं. दे आर कंटेनिंग अ स्क्लेरेंकाइमा, उसको स्क्लेरिड कहा जाता है वहां पे. इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. सो इफ यू लुक एट द टॉपिक इन द नटशेल ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा. Parenchyma, the cells are living in thick wall. Collenchyma, the cells are living in thick at corners. Sclerenchyma, the cells are dead and thick walled due to lignin deposition. The cells are over spherical or polygonal in shape. The cells are elongated and thickened at corners. Sclerenchyma, the cells are long and narrow. There is large intercellular space between the cells in case of parenchyma. There is a very little intercellular space in case of collenchyma. In case of sclerenchyma, there is no intercellular space. अच्छे से इसको नोट कर दो, ये कंपैरिजन में आ सकता है, डिफरेंस में आ सकता है, आपको खुद को याद करने में भी ये पूरा जो टेबल है वो काम आ जाएगा अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू. टेक ए पॉज, नोट इट डाउन. Okay, that's it. Now epidermal layer or a protective covering, outer covering, epidermis. Epidermis का मतलब सबसे बाहर का layer. The outermost of the protective layer of the plant cell is called epidermis. The epidermis is usually made up of a single layer of cell, but it may be a thicker and multi-layered
in a very hard habitat plant. The entire surface of the plant has outer covering of epidermis. It protects all the parts of the plant. Epidermis का main काम है outer part है तो protection. Epidermal cells on the aerial part of the plant secrete a waxy and a water-resistant layer on the outer surface. It protects against water loss, mechanical energy, and invention by parasitic fungi. ये उसके functions हो जाएंगे epidermal cells के. There is no intercellular space to make continuous layer of epidermis. Most epidermal cells are relatively flat. The outer and the side walls of the epidermis cells are thicker than the inner wall. Outer wall उसका जो होता है प्लांट की bark होती है वो comparatively thick होती है. अंदर जाओगे तो पतला हो गया होता है. एक प्लांट के अंदर एक और चीज होती है that is called stomata. Stomata is present in the leaves. हम पेड़ के नीचे समर में खड़ा रहते हैं तो हमको क्या लगता है? ठंडा लगता है. क्यों? It is transpiration of water that is taking place. Transpiration का मतलब क्या है? It is a loss of water in the atmosphere by plants during the process of photosynthesis. अब ये जो loss of water होता है वो थोड़ा हवा में जाएगा तो प्लांट के नीचे खड़े होंगे तो आपको ठंडक लगेगी. Because it is continuously losing the water. वो जो काम करवाता है वो है स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है लीफ के अंदर होता है एंड दिन में वो ट्रांसपिरेशन कंटिन्यू करता है, रात में स्टोमेटा गेट क्लोज तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उसका बंद हो जाता है. So let's come to stomata. The small pores present here and there in the epidermis of the leaf are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. Stomata regulate the process of transpiration, that is loss of water in the form of water vapor. They also regulate exchange of gases with atmosphere. Stomata control करता है प्लांट में से exchange of gases के लिए. The temperature of a plant body is maintained by transpiration through cooling effect. Epidermal cells of the roots, whose function is water absorption, commonly bear a long hair-like parts that greatly increases the total absorptive surface area. तो रूट में आपने देखा होगा रूट hairs होते हैं, पानी को absorb करते, प्लांट अंदर लेता है, and वो branches तक जाता है, and leaf तक जाता है, and through leaf के अंदर ये स्टोमेटा होता है. And the transpiration process is being completed. In some plants, like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. अगर तो हम कैक्टस का प्लांट देखते हैं, उसका लीफ एक तो बहुत छोटा होता है. कैक्टस का जो कांटा होता है बड़ा वाला, वो काफी वैक्सी होता है, काफी थिक होता है. Because of thick and very small leaf, transpiration का process slow down होता है. इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं they are able to survive in a harsh condition where water availability is not there. In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. Cutin is a chemical substance with a waterproof quality on its outer surface. So what is the function of stomata? The stomata helps in the exchange of gases with atmosphere at a time of photosynthesis and respiration. Transpiration, that is loss of water in the form of water vapor, also takes place through stomata. In outer layer of the branch of the tree, different form of outer layer of a is the outer layer of a branch of the tree different from the outer layer of the young stem? A question. क्या outer layer of a branch of a tree is it different from the outer layer of the young stem? Let's see. As the plant grow older, the outer protective tissues undergo certain changes. A strip of secondary meristems replaces the epidermis of the stem. जो secondary meristem होता है वो पुराने वालों को replace करता है. Cells on the outside are cut off from this layer. This on the several layers, and because of the thick cork or bark is formed around the tree. एक के ऊपर एक layer आता जाता है. तो जो बाहर का जो layer होता है वो thick बनने लगता है. अंदर वाले soft होते हैं. अंदर वाला layer बाहर से वो cut off हो जाता है. And that is how the bark will become thick. That is one of the point over here. Cells of the cork are dead and compactly arranged without intercellular space. Dead cells है तो arrange हो जाते हैं, compact हो जाते हैं. There is no intercellular space. They also have the chemical called suberin in their walls that make them impervious, that is not allowing fluid to pass through or to gas and water. तो अगर तो ये bark है, bark अगर तो आ जाती है
तो ना अंदर गैस जा सकता है, ना अंदर पानी जा सकता है, सबको बंद कर देता है। अगर हम इसको बात को कट कर देते तो हम वापस देखेंगे अ फ्रेश लेयर ऑफ the outer surface of the plant can be seen. So my dear students, मैंने अभी तक आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ तक करवाया। आप इस सिंपल परमानेंट टिश्यू को अच्छे से कर लो, डोंट गेट कंफ्यूज। इतना पार्ट को लर्न एकदम दिल लगा के कर लो, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस एक्टिविटी 6.2 इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट एंजॉय दिस पार्ट एंड लर्न इट इन अ वेरी डिसिसिव वे कि आपको दोबारा देखना नहीं है उस हिसाब से। थैंक यू।